Hey Logirians, welcome to Law Giri. I hope you have subscribed to Law Giri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to plan your year in advance as a law student, or rather how to plan your semester in advance as a law student, which is really important. Now, I know you'll be saying that, oh, I have to have fun, I have to be part of the important parties that are taking place, I have to do everything fun while I'm doing my graduation. बिल्कुल सही कहा, enjoy करना भी ज़रूरी है, but साथ ही साथ you also have to focus on certain other things. And you know, the best part is the way I am telling you, you can focus on your studies, on extracurricular activities, plus you can enjoy also if you plan in advance, right? And a lot of you are telling me that how can we acquire these skills? There are so many skills that we have to acquire, how to go about it. That is what I'm going to tell you in this video. Please do watch till the end because I have worked out a really amazing plan for all of you, which is really going to work. So chalo, let's get into the video. How much do you want to score in your law exams overall? When you're done with your law, अपनी डिग्री पे कितनी परसेंटेज लिखी हुई आनी चाहिए? What score do you want out there on your degree, right? Now, this is what you need to decide right in the beginning because that is going to keep you focused. That इतना लेकर ही लेकर आना है, तो accordingly you will study, right? Now, the number one I want to talk about is that a lot of your seniors, a lot of people in the field of advocacy are going to tell you that theoretical knowledge is of no help, right? It is the practical knowledge which is going to help. Okay, but tell me one thing, that the bare acts, the law which you are reading right now, CPC, IPC, contracts, torts, is it going to change? ये चेंज हो जाएगा? नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा. तो अगर लॉ स्कूल के अंदर थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लोगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो हाउ टू स्टडी लॉ वाली जो वीडियो करी है, जो मैंने पूरी सीरीज करी है लॉ टिप्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, दैट अंडरस्टैंड लॉ. But what do people do? What do students normally do in law school? They mug up. They mug up everything. रट्टा मारते हैं and then they say law school is useless. It is practical knowledge which is going to come to help. No, it is your theoretical knowledge which you're going to apply practically. So if you understand theory in your law school, it is going to be of great help. Now a lot of you say that we go for internships, but no one gives us work. No one gives us work. Or you are not able to understand what is going on. Why? Because हमने law school के अंदर जो basic हमें subjects पढ़ाए वो तो हमने mug up करके exam दे दिया, उसके बाद हमें understanding तो है ही नहीं. So that is what I'm trying to make you understand, that understanding law is very important, and if you understand and give the exams, you are going to score really well. That is going to be of great help. Next question that a lot of you have is, do marks matter? If I score 45%, 55%, right? If you score 55%, there's one person who has scored 55%, there's another person who has scored 70%, right? And there's another person who might have scored 70% and has plus good experience, say has done internships, can be seen on his or her CV that that person is having really good experience. बाकी सबका 55% है, ठीक है ना, एक का 55% है, ठीक है, और दूसरे का 70% है विदाउट एनी इंटर्नशिप, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई एफर्ट नहीं डाला है अपने एंड पे. किसको नौकरी दोगे? Now you have the choice to choose. Like I am giving you the choice to choose a person for your law firm, a person with 70% plus good experience, a person with only 55% and a person with 75%. ठीक है ना? और कौन सा चूज करोगे? मैं तो यही चूज करूंगी बिकॉज मेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्सन पे, बिकॉज दिस पर्सन हैज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हैज 70%, तो पता है, थ्योरी भी पढ़ी ही है, ठीक है ना, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी सही लग रही है मुझे परसेंटेज देखकर. हु विल गेट द जॉब? Who will get the job? This guy out here will get the job. Even if this is 75%, no, I won't
choose this person, I'll choose this person because first hand experience is going to make my life easier as a boss, because I won't have to work that hard on this person. Because practical knowledge, so it is practical knowledge plus theoretical knowledge. Practical plus theoretical knowledge is equal to a good CV, is equal to a गुड सीवी। ये बात समझ लो। तो आपका जो थ्योरी है, जो आपके मार्क्स हैं एग्जाम्स में, वो भी मैटर करते हैं। 60% 65% लेकर आते हो और उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर अबव एवरेज चले जाते हो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप कहोगे मेरे कॉलेज के अंदर कैसे पता चलेगा? जब भी हम इंटरव्यूज़ लेते हैं अपनी लॉ फर्म्स के लिए, तो हर कॉलेज में से इतने बच्चे आते हैं कि हमें पता चल जाता है कि टॉपर के कितने आते हैं एंड जो एवरेज स्टूडेंट है उसके कितने आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड what I am trying to say. Now, how you need to decide. Look, you have these options. Now, I hope you have your journal or notebook wherein you write down your goals. I have talked about it in detail a lot of time कि अपने goals लिखने हैं, तो उसके अंदर ये भी goal हमने लिख लेना है that how much you're going to score. You want to be in the top 5. टॉप 5 में आना चाहते हो, यू वांट टू बी अ टॉपर, कईयों का एम होता है, इट्स ओके इफ दैट इज योर एम, राइट इट डाउन। आई वांट टू स्कोर अबव 70 और अबव एवरेज। अब आपके लॉ स्कूल में जितना एवरेज बच्चे स्कोर कर रहे हैं, से आपके लॉ स्कूल में 70% हर कोई स्कोर कर रहा है, आता जाता स्टूडेंट इज स्कोरिंग 70%, राइट? इट इज एंड द टॉपर इज स्कोरिंग 80% एंड इट इज 75 to 76%। यू से ओके इतना स्कोर कर लूँ मैं, बहुत है, right? You want to score above average, ठीक है ना? Doesn't matters, you say hardly matters, my aim is, for example, you want to go for government job जिसके अंदर ये मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपने एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई वांट टू पास इन ऑल द एग्जाम्स, यू दैट इज ऑल आई वांट, right? You say I know I have to go go in for litigation, I just have to pass in all the exams, and it's better that I participate in more and more moot courts. That can also be your plan, completely depends on you. But yeah, if you're going for litigation, I'll say that at least understand the basic subjects so that when you join the court, when you start going to the courts, it is going to be of great help. Now what you need to look into is how much is your percentage right now. Right now, where do you stand, where do you stand, and how can you reach the goal that you have. Say you are in first year, then you don't need to really look into this, but if अगर आपका एक सेमेस्टर हो गया है और 2 सेमेस्टर हो गए हैं या 3 या 4 सेमेस्टर्स हो गए हैं, then you need to look into the matter that कितना परसेंटेज चल रहा है, and कैसे you need to create a plan that how you're going to increase your marks, right? Now I'm telling you again and again the videos that I have done, that how you should write the answer, how you should study law, everything is going to help you. Internships, I know I talk a lot about internships, but they are very, very important. Now the various types of internships, let me make this clear to you. Now there are online internships. Online internships, you can work online with various organizations. There are offline internships, ऑफलाइन इंटर्नशिप्स भी हैं हमारे पास, ठीक है ना? देन यू हैव वीकेंड इंटर्नशिप्स वेर इन यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड्स, राइट? यू हैव इवनिंग इंटर्नशिप्स, it could be offline or online, right? So there are various kinds of internships. Now it is on you that what kind of work you want to do and when do you have time, right? Also there are internships that you go for during your vacations. Now this kind of internships, the vacation internships you are going to do 100%, the vacation internships, and obviously the internships that are compulsory internships, मतलब जहाँ पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोल देती है कि सर्टिफिकेट सबमिट करना, it is compulsory that you intern, right? So these are the various kinds of internships. Now for every semester decide certain things for yourself when it comes to internships. Now what you need to decide really, how many internships
this year or this semester, how many internships can you do? से आपकी एक कंपल्सरी इंटर्नशिप है वो तो हो जाएगा. कंपल्सरी इंटर्नशिप के बाद यू से ओके आई हैव 1 month मोर एज वेकेशन, सो यहाँ पे भी आई विल डू इंटर्नशिप. And then you say okay fine, I think I can go for an offline internship also, which is with this particular organization. Sometimes, you know, some people, some students tell you, oh, do intern with this offline or online organization, really good, you get to learn a lot. That can be on your list. So how many internships in a year or semester that you should decide. Then what kind of organization? Say in your first year, you were in your first year and you have done an intern with NGO, you have worked with district court lawyer, right? And then you say okay fine, I also worked with one of the judges. Now what should I go? Okay fine, let me try to intern with a high court advocate, or understand how the high court's working takes place, and after that I may look for an advocate who works in the Supreme Court and intern with him or her, right? That kind of planning. Or maybe you say okay fine, I want to work with a law firm, so you will say okay fine, I'll work with a small or a local law firm, so that ultimately I can aim for the bigger ones, for the most famous ones. Okay, that kind of plan you need to create. When will I start applying for which internship? Now I have answered this question for you a lot of time, but in your planner you should mention that कब apply करना start करोगे. For internship in June, you should start applying at least 6 months before. For every internship in January, you should start applying for internship in June. For December internships, for December, somewhere in June, you should start applying, because if you apply, say you have to intern in December and you start applying in November, seats are going to be full. Seats are going to be full. So advance May, you should apply in. Next thing is which extracurricular activities in which semester. Now you'll say, ma'am, we are going to study law the way you are telling, right? Then you have asked us to go for internships, right? And now you're saying the extra curricular भी करो, और आपने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि enjoy तो करना ही करना है. देखो, now I'm going to tell you, I'm making things clear. Study law, this is something that you are going to do for sure. And studying law, I never tell people to start studying from the first day of the semester, because I know whenever exams are on and we go through those late night studying sessions, we always promise ourselves that agle semester se I'm going to start studying from day one. No one does that. Well, if you do that, then great, but I know most of you watching this video are not going to, right? So that takes place say 1 month or 2 months before the exam, 1.5 months या फिर 2 months पहले. I expect you guys to start studying. And it also depends on how much you want to score in your exams. ठीक है ना, वही हमने पहले सेट किया. ठीक है, ये तो है आपका इंटर्नशिप्स. हमारी जो इंटर्नशिप्स हैं वो कब हो रही है हमारी इंटर्नशिप्स? व्हेन आर दे टेकिंग प्लेस? वेकेशंस में. ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका डिपेंड करता है, बट वेकेशंस वाली मैं आपको 100% मार्क करवा रही हूँ कि ये तो कर ही करो. ठीक है ना, ये 1 month 1.5 months 2 months ले रहा है, ये वेकेशन टाइम है जो कि आपके सेमेस्टर से बाहर है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेमेस्टर. हो सकता है ड्यूरिंग द सेमेस्टर टाइम होता है ना, यू कैन डू दैट. एंड आई एम नॉट सेइंग डू ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज in one semester. No, you should not do that. One activity is equal to one semester, and then accordingly deciding कि और क्या करना है. मैंने टाइम दिखा दिया है, और enjoy तो होता ही है. Even when you go for extracurricular activities, no, especially these moot courts, MUNs and stuff, you really enjoy them, dude. Really, at least my times were really fun times. We used to have a lot of fun. My team was really great. We used to have fun. Even if we would lose, we would never cry or something. We would just sit down and make sure that from next time onwards we work a little harder, we improve on our weak points.
And yeah, it was always fun. So yeah, extracurricular activities are always fun. Now the first one is participating in a moot court. Now participating in a moot court, when you participate in a moot court, you learn how to work in a team, you learn how to achieve or how to complete work when there are deadlines. Then if you are a speaker, you work on your communication skills. If you are a researcher, then you also work on your writing skills, drafting skills. Even as a speaker, you get to work on your drafting and researching, because you do help the researcher. At least we used to help. You're seeing, when you participate in a moot court, you will acquire some of these skills, right? The next is writing of research paper. Now when you write a research paper, what are you working on? You're working on your research, you're working on your drafting, and again you also get to learn how to do things before a certain date, because there are deadlines to submit the research papers. Organizing an event, MUN, okay, running for the position of prefect or president. That a particular skill that you're going to acquire this year. Now this is not every semester, I'll say every year. In these 3 or 5 years, whatever you have in your hands, make sure that every year you are improving on something, you're improving on any of the skills. Now we all know what are the basic skills for being a successful advocate. It is drafting, speaking, your communication skills, researching, all of this, you should work on improving your language, writing, research, not being an introvert anymore, communication skills. All of this you should work, the developing the habit to read more and more, read more and more. I've done a detailed video that how you can build interest in reading. Watch that video. And as an advocate, you need to read more and more. You should not get, there should be no boredom when it comes to reading, right? You should be excited to read new things. And yeah, so that kind of this is also a skill. This is a skill. So every year you're going to attain some of these skills, and even if you miss out on some, I'll say that work on the weakest. Whichever skill, whichever thing you are weak at, work on that first. Say, do you feel worried or burdened as a law student because there's so much to do? There's nothing to worry. Now if you have planned, अगर plan कर ही लिया, now planning is one thing that no one is going to tell you. मुझे किसी ने नहीं बोला था when I entered law school that अच्छा ऐसा plan बना लो, you'll be sorted. No, there was no one to tell us, not even our seniors, professors. I mean, they would tell us, but it was all confusion. यहाँ पे I'm telling you everything, the way you need to plan, the choices that you have in everything. So you should be happy, you should not worry. Right now plan कि ठीक है, मुझे ये choices है. अगर तुम मान लो तुम्हारा second semester start हुआ, second semester में तुमने choose कर लिया कि यार I'll be going for a debate competition because I love debates. I want to go for a debate competition. I need to work on my writing. एंड मैं जो स्कोर होगा वो मेरा अबव एवरेज होगा फॉर द इंटायर लाइक 3 ईयर और 5 ईयर लॉ, वट एवर यूर डूइंग. तुम डिसाइड कर रहे हो तो वो सेमेस्टर तो तुम्हारा चल निकला ना, मतलब यू आर सॉर्टेड दैट ये मुझे करना है, तुम्हें पता है क्या करना है. बिकॉज बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि हमने करना कैसे और क्या करना है. अब बिकॉज यू नो दैट क्या करना है, नेक्स्ट इज हाउ यू हैव टू डू इट. एंड if you keep on digging and digging, you'll figure out how you have to do a thing, right? One co-curricular activity in one semester, I have told you time कैसे मिलेगा. Internships during the vacations when the law school allots specific time, और when you have vacations. ठीक है ना, vacations के टाइम पे कर लो, या जब तुम्हारा law school एक specific time allot कर रहा है तुम्हें. ठीक है. Studying law by being mindful of understanding it and not mugging it up. Studying law by being mindful of understanding it and not mugging it up for the sake of the exam, right? हमें law exams तो देने हैं ना, exams तो है ही है, right? है ना exams तो. If we are mindful and if we start studying at least 1.5 months before the exam so that we understand everything, won't it help you grow? So you need to make sure that what you are doing, you are giving your 100% in that. And if you do that, no, you're going to improve 101%. Now, for planning, you need some A4 sheets, or you can also get a notebook like this. If I was a law student now, I would have got something fancier. Anything would work. Planning is the main thing, right? We need some pens, some colored pens would work, or any blue pen or black pen would also work. We need a pencil, we need an eraser and a scale, and you're done and you're sorted. Right, now let's get into planning. So I'm going to write, I hope you're able to see, I'm writing my goals for law
to be achieved during or after law. ठीक है ना? तो you are going to write your goals. My goals basically. Now my goal number 1, how much score? So I'll be scoring my score aim is, you can write like this, aim is, I am aiming that I have to score above 70%, right? Now this is my aim for percentage. Now my internship goals, internships. Now internships, now number 1, I have to plan number, right? Number of interns. You're going to write it like this only so that you're clear. Number of internships that I'm going to do. I have 5 years, so I am going to do around 10 to 15 interns. 10 to 15 internships is my aim. ठीक है ना? Kinds of internship. Kinds, I want to cover NGOs, I want to work with advocates, I want to work with law firms, and I have some dream organizations to work with. Okay, I want to work with Kiran Bedi ma'am's NGO, so I'm going to find the name of that, I'm going to write that. And I can also work with Khaitan or some of the top or any top law firm of India or international, okay, of India or international. So I'm going to also see the requirements and everything of that sort. These are my aims related to internships. Right now, next aim is, okay, fine, skills that I think I am good at and bad at. Now, skills that I want to acquire is, okay, I'm going to firstly rate myself that how I am at writing, drafting, speaking, then planning, reading. These are the skills I basically want to acquire. Okay, say my writing is okay, 6 out of 10 I'll give myself. Drafting and writing are same. Right now I'm at 0 because I have not learned how to do legal drafting. Speaking, I'll rate myself like 5 out of 10. Planning, I am 8 out of 10. Say example, reading, I'm at 4 out of 10. So I need to improve. Now so as I told you in the video, I'm going to work on the worst first. So this is my weakest, right? Then I have to work on my speaking, second weakest, then I'll go for writing, third weakest, and then fourth weakest. और ड्राफ्टिंग तो मैं साथ साथ लर्न कर ही लूँगी, ठीक है ना, जब मैं इंटर्नशिप्स पे जाऊँगी, ठीक है ना. Now next is extracurricular activities. Now what I want to do, I want to go for moot courts, at least 2. I want to write research papers and get published a research paper, right? Then I want to participate in debates. I want to participate in MUNs. MUN, what other options do I have? Want to be part of the organizing committee, stand for a position. I have to do everything. That kind of person I am. But you can always choose anything that you like, right? Like this, if you can see. So you're going to create a plan like this, ठीक है ना? पूरा plan तुम्हारा ये होगा, right? And if you want to make it more look more good, because you're going to look at a lot of time, you can put some pictures, okay, of what you want to, you're aiming for, what are your goals, okay? Maybe you want to be the winner in a moot court competition, or you want it to get published. Again, you want to win certain things, right? Kind of that. So this can be that thing, okay? Now मैंने अपने goals लिख लिए. I've written all my goals. Now what I want to do in these 5 years, every year I'm going to divide these goals for every year. That is what I'm going to do. So I'll get back to you after dividing this sheet into 5 good parts, okay? Let me. So these are my 5 years. Say you're watching this video in your second year or third year, उसमें ही divide कर लो. Even if you're watching this video when only 2 semesters are left, even 1 is left, you can plan for that also, right? So I'm quickly going to write the years. Though this is my first year, so I've written my years, and now what I'm going to do is I am going to take out this plan and put in everything out here, right? So
I have to study, I have to aim is above 70%. And one more thing, you can even divide the years further into semesters, like first semester, second, third, fourth, fifth, sixth, as you want. I'm planning the year. Say in the first semester I have to study and get 70%. Okay, this is my number one aim. Right, next is number of interns. Say in my first year I have to do 2 interns by my own choice. I want to go with NGO, so I start with an NGO and NGO या एडवोकेट के साथ मैं इंटर्न करूँगी और ये दोनों इंटर्न्स मुझे करनी ही करनी है फर्स्ट ईयर में. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई विल बी डन बाय दिस with this. Okay, now the skills that I want to acquire, I said I'll work on the weakest one. So my weakest is reading. I'll start reading at least 10 books in 1 year. So this is my aim. ठीक है, मुझे 10 books पढ़नी है in 1 year so that I am a good reader, or I can even start reading 1 judgment a day. ठीक है ना, I can start doing that also. Now the next thing that I have to do is extracurricular. So in this first year I am going to be going I'm going to study and get 70% in terms of my studies. NGO and advocate, I'm going to intern with NGO and advocate. Reading at least 10 books, that's my aim because I have to work on the skill that I'm weakest at. And then I may also read 1 judgment a day. In दोनों में से एक या both of it I can do, and or. And then there comes extracurricular activities. So in terms of extracurricular activities, you can also divide these like by writing here that extra में मैं क्या करूँगी. Extra I can go for okay fine, I'll start writing my research paper in first year itself. I have to write research paper because I'm looking forward to getting it published. And the second is I might go for organizing or debate, like debate या organizing में से एक भी चीज़, because debates are dicey, it might happen, it might not happen, but if any debates are happening I'll participate in that, otherwise I'll go for organizing. So हो गया ना, here is my skill, here is I'm working on a skill, here is my internships, and this is my study matter. Right, now moving on to the second year, let's do it a little better way. Now for study, say in your first year you could not score 70, you are on 65, so you say improving percentage, creating a plan to improve percentage. ठीक है, say watching all Law Giri's videos. Guys, please watch those videos wherein I have discussed how to study. They are going to be so helpful, right? In terms of studies you're going to do that. And then what we have to do next is internships. ठीक है, इस साल मैं internships क्या कर रही हूँ, internships सेकेंड ईयर में मुझे इंटर्न करना है. से यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ करूँगी, यहाँ पे मुझे हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ इंटर्न करना है, और या तो मैं एक और एनजीओ के साथ काम करना चाहती हूँ, और आई वांट टू वर्क विद अ लॉ फर्म, अ लोकल और अ स्मॉल लॉ फर्म. ठीक है ना, ठीक है, ये मेरा एम है. उसके बाद next is, now we are done with internships, then the skill set that I'm going to acquire this year. So I did reading, I'm good with reading now, and I might score myself, and I say I'm 8.5 out of 10 in reading now. I can read well, I don't get bored after reading so much, right? And now the skill set that I want to, second जो मेरा weakest है वो है speaking. ठीक है, तो speaking पे improve करने के लिए, ठीक है, मुझे speaking का improve करना है, तो I might join a club or anything, or I might go for weekend classes for an NGO or anything of that sort. Like that could be my action plan, decide करना है इसके लिए. ठीक है, तो मुझे अपनी speaking improve करनी है इस साल. एंड देन एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने रिसर्च पेपर लिख लिया और डिबेटिंग हुई, मैंने डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर लिया, बट ऑर्गेनाइजिंग रह गया, तो आई विल टेक फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजिंग. मुझे इस साल कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, कुछ भी होता है ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइजिंग के अलावा और क्या था, मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट कर लिया. ठीक है, और मेरा क्या था, रिसर्च पेपर भी मैंने लिख लिया. अब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ थर्ड, एंड मे बी आई पार्टिसिपेट इन एन MUN और अ मूट कोर्ट. ठीक है ना, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगी या MUN, चॉइसेस दे सकते हो आप अपने आप को. राइट, दिस इज़ हाउ यू प्लान योर सेकेंड ईयर. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव थर्ड ईयर. Now in your third year, study के अंदर say you are doing pretty well.
you have taken your percentage overall to 71%. तो you say continue this, whatever you are doing, continue, ठीक है ना. And then you might say internships, ठीक है ना. internships पे आए तो मेरा एम जो था, आई वर्कड विद हाई कोर्ट एडवोकेट, हेयर आई वर्कड विद अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट, ठीक है. आई वर्कड विद एनजीओ एंड देन आई वर्कड विद अ स्मॉल लॉ फर्म, ठीक है. नाउ आई से अप्लाई विद किरण बेदीज NGO, right? This is my goal, so I think it's time to achieve this. Number 1. Number 2, I want to work with Supreme Court advocate, right? Now I want to work with Supreme Court का जो एडवोकेट. द स्किल दैट आई वांट टू एक्वायर, स्किल कौन सी एक्वायर करी हूँ. अब देखो हमारा जो प्लान था वो कैसा चल रहा है. हमारा प्लान अच्छा चल रहा है. मैंने अपनी रीडिंग कर ली इम्प्रूव, स्पीकिंग में भी मैंने क्लब ज्वाइन किया अपना, मैंने बच्चों को पढ़ाया सो दैट आई इम्प्रूव 5 से. अगेन आई एम समवेयर ऑन 8 है, ठीक है ना. अब मेरा थर्ड वीकेस्ट क्या था, राइटिंग. अंदर आई पार्टिसिपेटेड इन अ मूट कोर्ट वेर इन आई रोट मेमोरियल्स एंड स्टफ लाइक दैट, और मैंने ड्राफ्टिंग से भी सीखा. बट अब इधर राइटिंग के अंदर specifically I'm going to work on my writing by watching, maybe you watch Law Giri's video and do whatever they have told to do in a video. But if you're reading, I'm 100% sure your writing would improve, just telling for the sake. Now I'm going to work on my writing in terms of skill, ठीक है. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया इवेंट. मैंने MUN और मूट कोर्ट में से एक में पार्टिसिपेट कर लिया. से यू पार्टिसिपेटेड इन अ MUN, सो दिस इज़ डन. नाउ अब मेरे जो गोल्स हैं उसके अंदर से I am done with MUN, so my moot courts are left and stand for a position, right? So now you put this on your list that I have to participate in a moot court. Now you should not delay your moot courts. You might start with the first year. I'm just giving you an example. Or you say okay MUN भी अच्छा था, मैं MUN पर moot court तो 100% जाना ही जाना है, MUN भी जा सकती हूँ. उसके बाद वॉट इज़ लेफ्ट इज़ यू आर स्टैंडिंग फॉर अ पोजिशन. तो पोजिशन पे के लिए जहाँ पे भी मुझे चॉइस मिलेगी आई विल गो फॉर दैट, राइट. नाउ आर यू लुकिंग एट इट दैट इफ़ यू प्लान योर ईयर्स, मतलब अभी मैंने 3 years ही प्लान किए हैं तुम्हारे, एंड यू आर डन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर डन विद a lot of things. बेसिकली हमें लगता है कि लॉ गिरी बोलता है ये करो वो करो, मैम तो बोलती रहती है, दीदी तो बोलती रहती है. बट इफ़ यू प्लान यू कैन डू इट. कैन यू सी वी आर स्टिल टू वर्क ऑन आवर 4th and 5th year, still to work. If you do plan on paper, you can see what you can achieve. You have a lot of time. We don't utilize it wisely. That's the only thing. Okay. Fun भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें clear है कि यार मुझे ये करना है, right? Now let's see how to plan our year, particularly the months. Okay. Now I've written down the name of the months and say you're planning the year 2021 here. Now you're planning the year 2021 here. So what we are going to do, we are just going to copy and paste, nothing else. What we are going to copy? We are going to copy this year. Say this is the year 2021. This is the year 2021, the first year here. That is what we are going to copy out and divide it onto our sheet, wherein we are going to mention that in which month we are going to do what, so that we can achieve this goal of ours. Say in January, you have your exams or यू हैव योर कंपल्सरी इंटर्नशिप, जो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि भाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना. मोस्टली होती है वैसे जनवरी में इंटर्नशिप, या फिर और यू हैव योर वेकेशंस. एनीथिंग, write down the thing that is there with a red pen. So it could be anything. You're going to note that down. Firstly, write down maybe in say April you have your exams, so you're going to write down exams, and June you have your vacations. So note down what are the things. मतलब अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है वो लो और उसमें से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना. Say in December also you have your exams, and then thereafter you might have vacations or something compulsory internship, 15 days की vacations है, दिवाली holidays हैं, जो भी है वो सब नोट कर लो so that you can plan accordingly. Now for example in January we are taking that you have your vacations. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, what we are going to do in January, we are going to do an internship. Vacations are for
इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स कौन सी करनी है हमें यहाँ पे, यू आर गोइंग, मे बी यू आर गोइंग फॉर एनजीओ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है ना, ये करनी है। बट हमें एक और चीज़ सिखाई गई है कि अगर जून के अंदर वेकेशंस है और यहाँ पे मे बी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट के साथ इंटर्न कर रहे हो, तो फिर आपने अप्लाई कब करना है, अप्लाई फॉर जून इंटर्नशिप, ठीक है ना, ये आपने नोट कर लेना है। और यहाँ पे हम रिसर्च पेपर वाला भी, और क्या हमारी चीज़ है, ये इंटर्नशिप्स वाला हमारा सॉर्टेड है, स्टडी वाला हम सॉर्टेड कर लेंगे। मे बी हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स है तो हम यहाँ से पढ़ना स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम स्टार्ट कर लेंगे, स्टडी वाला टाइम हो जाएगा हमारा। ये एनजीओ एडवोकेट हमने कर लिया, रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बुक डिसाइड कर लो, मुझे बुक 1 पढ़नी है, यहाँ पे बुक 2, मे बी ये एग्ज़ाम्स है तो मैं नहीं पढ़ूंगी, एग्ज़ाम्स के बाद यहाँ पे मैं बुक 2 और 3 पढ़ लूँगी। और यहाँ पे जब यहाँ पे जाना है तो मेरे पास फ्री टाइम होगा तो बुक 4 और 5 पढ़ लूँगी। तो ऐसे डिसाइड कर दोगे रीडिंग वाला। क्यों कर रही हूँ ये, बिकॉज मुझे अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है और मैंने कहा था मैं बुक्स पढ़ूंगी और जजमेंट भी पढ़ूंगी। यहाँ पे मे बी मैं यहाँ पे जजमेंट्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। उसके बाद मुझे डिबेट में भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो मैं अपना, ये एग्ज़ाम्स हो गए, स्टडी है, एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बाद मे बी मैं यहाँ पे कहीं पे वो प्लान कर लूँगी, या फिर मे बी मैं फरवरी में कुछ दिन रिसर्च पेपर को दे दूँगी, यहाँ पे रिसर्च पेपर को दे दूँगी, ठीक है ना। तो ऐसा आप प्लान कर सकते हैं मई के अंदर। यहाँ पे जून के अंदर वेकेशंस हैं, यहाँ पे भी मे बी छुट्टियाँ हैं आपकी, तो रिसर्च पेपर को दे दोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो रिसर्च पेपर, डिबेट आप देखते रहोगे कि हो रही है नहीं हो रही, नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। देख रहे हो, अगर आप पूरा ईयर एट लेंथ प्लान करते हो, बिकॉज मुझे पता है जून के अंदर मैक्सिमम सेमेस्टर एंड हो जाता है, बट अगर मैं पूरा साल प्लान करती हूँ, अपना पूरा 1 ईयर प्लान कर रही हूँ, सेमेस्टर नहीं प्लान कर रही हूँ, तो मैं मे बी ऑर्गेनाइजिंग जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो मंथ्स है उसके अंदर मुझे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिली ऑर्गेनाइज करने की या डिबेट करने की, मैं वो कर दूंगी। नाउ कैन यू सी, इफ़ यू प्लान, एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दे रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी मंथ्स हैं हमारे पास, बट हम वो वेस्ट कर देते हैं। सो मेक श्योर दैट यू प्लान। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर के बाद जनवरी में इंटर्न करना है, जनवरी में इंटर्न करना है, ठीक है ना, 2022 में इंटर्न करोगे ऑब्वियसली, तो कब अप्लाई करोगे, अप्लाई फॉर जैन इंटर्न, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी अपना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे पता है मुझे हाई कोर्ट या एनजीओ के साथ करना है, तो हाई कोर्ट या मैं सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैं सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करूँगी, हाई कोर्ट, एनजीओ, या फिर कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, हाई कोर्ट में मिल जाए मुझे, एनजीओ में मिल जाए या लॉ फॉर्म में मिल जाए, तो मैं वो यहाँ पे नोट करूँगी। सो बेसिकली इफ़ यू स्टार्ट प्लानिंग योर ईयर, यू आर गोइंग टू बी एट ईज। और तुम्हें पता है इंटर्नशिप के टाइम पे तुम बड़े आराम से रिसर्च पेपर लिख सकते हो, बिकॉज इवनिंग्स आर फ्री, तुम स्किल एक्वायर कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये जनवरी का महीना डे टू डे प्लान कर लो, डे टू डे प्लान कर लो। कैसे करोगे डे टू डे प्लान, जनवरी को डेली डे टू डे में प्लान करना है, बहुत डिटेल में जाएंगे हम जनवरी के लिए, ये हर मंथ प्लान करना है। जनवरी के अंदर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, ठीक है ना, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं इंटर्नशिप पे जा रही हूँ, तो जब मैं इंटर्नशिप पे जा रही हूँ तो मेरा मान लीजिए 8 to 5 o'clock का टाइम वहीं पे जा रहा है। आफ्टर 5 प्लान करना है कि मुझे क्या करना है। आफ्टर 5 में एक तो मुझे इंटर्नशिप्स अप्लाई करनी है, जून इंटर्नशिप अप्लाई करनी है, तो से फर्स्ट वीक के अंदर ही मैं ये करके डेली के अंदर डाल के कर दूँगी, ठीक है ना। और 5 के बाद यहाँ पे अगर टाइम फ्री है तो बुक साथ कैरी कर लूँगी, बुक पढ़ती रहूँगी, या जजमेंट अ डे पढ़ लूँगी अगर वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो घर आके बुक्स भी पढ़ लूँगी। फर्स्ट वीक में मैंने ये सारा अप्लाई करके ख़त्म कर दिया, उसके बाद तो देखना है, फिर उसके बाद बुक पढ़ सकती हूँ, ठीक है ना। यस, एंड स्टडी। अब यहाँ पे देखो क्या था हमारा, इंटर्नशिप्स, एनजीओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ इंटर्न करियो, अप्लाई फॉर जून इंटर्नशिप, बुक पढ़नी है, एक बस यही काम है। तो फिर आप बड़े आराम से कर सकते हो ये, ठीक है। फरवरी के अंदर स्टडी के साथ रिसर्च पेपर था, आप कह रहे हो यार मेरे पास बड़ा ही फ्री टाइम है, ये रिसर्च पेपर भी अभी लिख के ख़त्म कर देती हूँ, फिर स्टडी को दे दूँगी। दैट इज़ हाउ यू नीड टू इम्प्रोवाइज। डेली प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू डू लिस्ट, अगर मेरी टू डू लिस्ट देखोगे बहुत लंबी होती है, बट जब वो टू डू लिस्ट पे टिक मारते हो ना ऐसे, बहुत मज़ा आता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि ऐसे केमिकल्स हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है जब हम टिक मारते हैं टू डू लिस्ट पे, या हम कुछ अचीव करते हैं, तो वो मोटिवेशन की तरह एक्ट होता है। तो कैन वी डू दैट, कैन वी
Tell me. Ab, since you are a part of Law Giri community, you cannot be just a dreamer. You cannot be just a dreamer. You need to be a doer. And for being a doer, you need to take certain actions. तो for example, you have to participate in a moot court. ठीक है ना, तुमने decide कर लिया कि इस semester I'm going to participate in a moot court. Then obviously you'll keep an eye on the moot court competitions. Maybe you have to be a part of a society or a committee of your university to be able to participate in a moot court competition, or you know, before you can even make it to the final thing, you have to first, पहले आपको college level पे competition होता है जिसके अंदर the teams prepare and then finally the best one is allowed to go for the competition. Whatever is there, you have to do that. Maybe in your college or university you do not have a team at all, you have to go and ask people that do you want to participate, do you want to participate kind of situation, or you have to take the initiative of creating a moot court society. Whatever is there, you should do that, right? Acquiring the skills required. Now obviously in the moot court you say I want to go as a speaker, then you have to work on your speaking skills. Whatever your speaking skills are, you should go ahead and be confident that you will participate. Okay, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉ गिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLawGiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।